Hey guys, this is Abhishek Jaiswal from Excellence Private Tutor. I'm the Managing Director of Excellence Private Tutor. And today I want to tell a story about an amazing student of mine, this is Aditya Dwivedi. So आप लोग को जो डाउट्स एंड माइंड ब्लॉक्स होता है ना कि जेडब्ल्यू में आपको परसेंटेज अच्छे बच्चे का ही होता है, ये सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे. तो हम लोग कुछ क्वेश्चन आदित्य से पूछते हैं. सो आदित्य, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द स्कोर व्हाट यू गेट इन 10th स्टैंडर्ड? I got 49% in 10th standard. Seriously Aditya, 49%? Yep, I got 49% and like when I जितना गट्स था मेरे अंदर मैंने मतलब अच्छे से जोड़ा और मैंने डैड को बोला कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है. एंड देन आई जस्ट ट्राइड देयर लाइक बट वो पढ़ाई जैसे होनी थी वैसे हो नहीं पाई. सो जैसे वहाँ इंस्टीट्यूट में जाके डर लगने लगा कि इतने सारे बच्चे हैं, इनके किसी के 95% आ रहे हैं, किसी के 96% आ रहे हैं, कि कोई 10 CGPA वाले हैं. एंड देन कुछ रिपीटर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में. और जो एक बार मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये जो अभी मैंने JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया. एंड लाइक वैसा जो अंदर एक डर बैठता जा रहा था कि यार गलत तो नहीं किया मैंने इंजीनियरिंग लेके. तो व्हेन आई गॉट लाइक इन टच विद देम लाइक एक्सीलेंस प्राइवेट ट्यूटर्स, they just helped me with every single thing. Like I got like there were many problems which I got. First of all about studying, second about timetable, and the third thing, they just held a counseling for me and just they told like they analyzed my problems which I was not able to analyze myself, and like they told everything. Thank you sir for just helping me out with everything, and now I got my marks. That's a 99.62 percentile, and that's only because of Excellence Private Tutors. So I really hope this breaks the stereotype of like 10th standard में marks आपको बहुत ज़्यादा अच्छे आने चाहिए to score crack JEE. I seriously don't think, and I suggest each and everyone, if you have a passion for doing it, you can definitely do whatever you want. So I hope this example of Aditya will definitely help you and will move forward in life. So all the best.